गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड द फोर्स विच होल्ड्स ए नंबर ऑफ एटम्स टुगेदर इन ए कंपाउंड और इन द मोलिक्यूल। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर होल्ड टुगेदर by a force of attraction, and this force hold together the carbon and oxygen elements together are called chemical bond. And water H2O, hydrogen and oxygen elements, there are two different elements, hydrogen and oxygen, but these elements are hold together by a force, and this force of attraction is also known as the chemical bond. Then the chemical bond is the force which holds a number of atoms within a molecule or a compound is called a chemical bond. The chemical bonds have many different types, but we can discuss the ionic bond. Ionic bond. As we know, ionic compounds are those compounds having formed by loss and gain of electron. Loss and gain of electron. It means ionic bond are also known as the electrovalent bond. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को बेटा आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। आयनिक मीन्स वो कंपाउंड्स या वो बॉन्ड जो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं वन एटम टू अनदर एटम। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, देन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। देन फॉर एग्जांपल, when sodium react with chlorine, sodium react with chlorine to form sodium chloride, NaCl. Due to the formation of sodium chloride NaCl, sodium acquire the electropositive ion and chlorine have electronegative ion. By transfer of electron, then sodium, the atomic number is 281. Configuration is 281 and atomic number is 11, and by electron dot structure plus chlorine, atomic number is 17 and configuration is 287, then electron dot structure, then by permanent transfer of electron, then by transfer of electron, sodium transfer the one electron from chlorine atom, and by due to the sodium and chlorine, a chemical bond formed between these two elements, and this bond is known as ionic bond, and due to the formation of ionic sodium chloride, NaCl, by transfer of electron. And the another chemical bond we can discuss, the covalent bond. Covalent bond, as we know, covalent means non-ionic. By sharing of electrons between the two atoms, the bond formed between the two atoms is known as covalent bond. By sharing of electron, by mutual sharing of electron, note the permanent transfer of electron from one atom to another atom. Okay. For example, the formation of methane molecule. Formation of methane molecule. Formation of methane gas. Methane molecule. The atomic number of carbon is 6 and configuration is 2 and 4, and the electron dot structure of carbon, hydrogen have atomic number 1, valence shell have 1 electron, then hydrogen electron dot structure, and the formation of methane molecule, the carbon share 4 electron to carbon to complete the 8 electron in valence shell, share another 4 electrons from 4 hydrogen atoms. कार्बन ने अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बेटा 4 हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि बट हाइड्रोजन एटम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कंबाइंड हुए, और कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म single covalent bond, and to form single covalent bond.
by formation of methane gas molecule CH4. This is the covalent bond and formation of covalent compound. ओके, नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. जो भी कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड आपसे फॉर्म करवाए जाए, देन फॉर एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास, हम आयोनिक कंपाउंड पहले डिस्कस कर सके, उसी तरह से हमें आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है. नाउ वी कैन डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड. हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. सबसे पहले हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, that is 12. After that, electronic configuration of magnesium, electronic configuration, electronic configuration of magnesium atom. Then K cell have 2 electron, L8, and M cell have 2 electrons, also 2 electron. The electron dot structure of magnesium, electron dot structure are also called the Lewis structure and Lewis symbol. Electron dot structure of magnesium. Magnesium have valence 2 electrons, valence cell. Then these 2 electrons represent the 2 dots and cross of magnesium symbol. The electron dot structure of magnesium. Magnesium element have 2 electrons in their valence cell. Then it lost 2 electrons to form nearest noble gas configuration of neon. मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल. मैग्नीशियम की वैलेंस सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट अनदर एलिमेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड इज क्लोरीन. देन एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electronic configuration of chlorine. K cell have 2 electron, L have 8 electron, and M cell have also 7 electron. And electron dot structure of chlorine, electron dot structure of chlorine. Chlorine has 7 valence electron, then 7 dot represent across the chlorine symbol. Then it gain of 1 electron. Chlorine 1 atom gain 1 electron to acquire the noble gas configuration of argon, atomic number 18, and the formation of magnesium chloride. Formation of magnesium chloride. As we know, the magnesium atom have 2 valence cell have 2 electron, and magnesium lost 2 electron, but chlorine 1 atom only 1 electron gain. It means magnesium 1 atom react with 2 chlorine atom. Then magnesium react with 2 chlorine atom. This is the electron dot structure of chlorine atom. क्लोरीन की मैग्नीशियम की वैलेंस सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बट क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा. इसलिए यहाँ पर हमें क्लोरीन के 2 एटम लेने बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन मैग्नीशियम हैव 2 पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, and chlorine have electronegative ion. By gaining of 1 electron from magnesium atom, each chlorine atom have
one electronegative elements, and due to formation of magnesium chloride MgCl2. In the same way, another compounds from sodium chloride, magnesium oxide, and different compounds in NCERT books we can discuss the formation of ionic compounds. Now the properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. First, physical state. Physical state. Most of the ionic compounds are crystalline solid. Crystalline solid compounds because ionic compounds have strong force of attraction between the electropositive and electronegative element, and due to the strong force of attraction, most of the ionic compounds exist in nature in crystalline solid state. Now the second property is solubility. Solubility. Ionic compounds are also soluble in water, which is a polar solvent, but insoluble in organic solvent like benzene, alcohol, ether, chloroform, etc. It means ionic compounds show the like dissolve like property. Like dissolve like. Ionic compounds show the like dissolve like property. Like dissolve like means ionic compounds dissolve in ionic compound. They does not dissolve in covalent compound and inorganic compounds such as chloroform, alcohol, and other organic solvents. They also dissolve in ionic compounds, but they are soluble in water because it is a polar solvent. And now the third property is melting and boiling point. Melting point and boiling point. Due to strong force of attraction in covalent ionic compound, they have strong high melting and boiling point due to electrostatic force of attraction of electropositive and electronegative element. And now electrical conductivity. Electrical conductivity. Electrical conductivity in molten state or aqueous state. In molten state or aqueous solution and aqueous solution of ionic compounds conduct electricity due to free ions present in the solution. But in solid state it does not conduct electricity. बेटा आयनिक कंपाउंड से आयंस फॉर्म करेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट तभी पास हो पाएगा तब वो या तो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में. अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन सॉलिड स्टेट they have no any free type of ions, and due to absence of ions the electric current does not pass through the solid state, but in molten state and aqueous solution it have a number of free ions, and due to free ions the electric current pass through the solution. And now next property is color in flame. Color in flame. Most of the ionic compounds and salt brought into the flame. It means characteristic property of ionic compounds are shown in the flame. बहुत से आयनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो उनकी कलर फ्लेम के द्वारा ही उनको हम पहचान सकते हैं कि इस फ्लेम कलर की फ्लेम है तो दिस इज द आयनिक कंपाउंड एंड विच कंपाउंड. एंड आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शन ड्यू टू फ्री आयंस. It means the next property we can say the ionic compounds show ionic reaction. Ionic reaction due to free ions. Ionic compounds also react the another ionic compound that does not react with the covalent compound because ionic compounds react with ionic compounds. They show the ionic reaction. Okay.